On September 15, the second assassination attempt was made on former President Donald Trump while he was golfing in Palm Beach, Florida. Multiple shots were fired at Trump, who was on the golf course between 5 holes and 6. His Secret Service agents, who were stationed ahead and behind him, responded immediately, securing Trump and escorting him to safety. The suspected attacker, Ryan Wesley Roth from Hawaii, was stationed between 300 to 500 yards from Trump and used an AK-47 rifle. The Secret Service agents fired at Roth, though it's unclear if there was direct exchange of fire. Roth was arrested with an AK-47, a GoPro camera and a backpack. The FBI later confirmed it as an attempt assassination. Former President Donald Trump is safe and unharmed. Service personnel opened fire on a gunman located near the property line, and this matter is under investigation. Shots fired. That was called in by the Secret Service. Because we're in constant contact with them all the time, we were notified of that, and we had units here that immediately sealed off the area. Fortunately, we were able to locate a witness that came to us and said, hey, I saw the guy running out of the bushes. He jumped into a black Nissan, and I took a picture of the vehicle and the tag, which was great. So we had that information. Our real-time crime center put it out to the license plate readers. And we were able to get a hit on that vehicle on I-95 as it was headed into Martin County. We got a hold of Martin County Sheriff's Office, alerted them, and they spotted the vehicle and pulled it over and detained the guy. After that, we took the the witness that witnessed the incident, flew him up there, and he identified as the person that he saw running out of the bushes and jumped into the car. Now, in the bushes where this guy was is an AK-47 style rifle with a scope, 2 backpacks which were hung on the fence that had ceramic tile in them, and a GoPro, which he was going to take pictures of. So those are being processed right now. The Secret Service agent that was on the course did a fantastic job. What they do is they have an agent that jumps 1 hole ahead of time to where the president was at. And he was able to spot this rifle barrel sticking out of the fence and immediately engage that individual, at which time the individual. Aditi Rao Hidari and Siddharth have tied the knot in a charming and intimate Hindu wedding ceremony. Aditi wore a golden organza lehenga adorned with ruby and gold jewelry, while Siddharth opted for a simple kurta and veshti. The couple shared their wedding photos and heartfelt messages on social media expressing their love and commitment. Their surprise wedding garnered well wishes from celebrities like Sonakshi Sinha and Athia Shetty. Aditi and Siddharth, who met on the set of the 2021 Mahasamudram, had previously announced their engagement in a similarly low-key fashion. Aditi fondly recalled Siddharth's proposal, which took place at a palace significant to her childhood. Ed Sheeran's collaboration with Indian artists continued to flourish. Fans shared videos of the surprise performance where Sheeran and Singh sang Sheeran's hit song Perfect together. The collaboration thrilled the audience, with one user humorously noting that their performance saved the earth and another expressing surprise at the unexpected duet. In Chhattisgarh, a 40-year-old man, Sanjay Jaiswal, suffered a brain hemorrhage likely caused by exposure to loud DJ music. The incident occurred while Jaiswal was loading DJ equipment and led to severe headaches and vomiting. Despite having no prior health issues, a CT scan revealed a blood clot in his brain. Doctors, initially puzzled by his normal blood pressure, suspected the loud noise from the DJ speakers as the trigger. ENT specialist Dr. Shalindra Gupta warned of the health risk associated with loud noise, including hearing loss and hypertension. The case has heightened concerns about noise pollution, prompting locals for stricter regulations and a high-level government review on noise control measures. साउंड बज रहा था, तो बजने की वजह से उनका उल्टी और माथा में चक्कर उक्कर आने लगा। उनको घर लाया गया, बाइक से बिठा के लाने के बाद उनका तबीयत और बिगड़ता गया। प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाने के बाद
उनको उन लोग बताया कि यहाँ से सक्सेस नहीं है, ले जाइए दूधी। अंबिकापुर ले जाने के बाद फिर वहाँ डॉक्टर बोला, वो सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन में बोला जी डॉक्टर जी नहीं, ये जो है नस, ये जो है ये सिर का नस फट गया है और इसके कारण जो है वो यहाँ नहीं, नस का डॉक्टर नहीं है और इसको हम रायपुर ले जाना पड़ेगा। तो तेज आवाज है वो अभी आज के समय का ये प्रकरण नहीं है, लगभग 2500 साल पुराना ये प्रकरण है। हार्ट अटैक तक की घटना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर यदि बढ़ता यदि है यदि तेज ध्वनि या प्रदूषण से, तो इस तरह की घटना। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will meet his former deputy Manish Sisodia on Monday to discuss his recent resignation and appointment of a new chief minister. This meeting at Kejriwal's official residence in Civil Lines follows Kejriwal's announcement on Sunday that he will step down in 2 days. He plans to hold a meeting with AAP MLAs to select his successor, with potential candidates including his wife Sunita and Delhi Minister Ashti and Gopal Rai. Kejriwal framed his resignation as a test to public trust, urging voters to judge his honesty through their votes. The BJP has criticized the move as drama and a confession of crime. In his address from the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi emphasized the need for one nation, one election, a key promise on the BJP's manifesto. As the India government's third term marks 100 days, Modi urged political parties to ensure national progress and the effective use of resources for the common person. A high-level panel led by former President Ramnath Kovind has proposed simultaneous elections for the Lok Sabha and state assemblies, with local body polls to follow. The Law Commission is expected to recommend holding synchronized elections for all government years starting to 2029. The Kovind panel's recommendations include 18 proposed constitutional amendments, which will require parliamentary approval but not state ratification. Chief Minister Revanth Reddy urged Congress leaders and activists to follow on winning the 2029 national elections and support Rahul Gandhi's bid for Prime Minister, referring to the upcoming polls as the finals after their recent state victory. At a ceremony where B. Mahesh Kumar Gaud was sworn in as TPCC chief, Reddy emphasized the need for the party to secure 15 MP seats to unseat the Modi-led NDA government. He highlighted the Congress government's achievements, including its 6 guarantees and plans to create 65,000 jobs, with an additional 15,000 jobs to be announced by December. AICC Telangana in charge Deepa Das Munshi praised Gaud's appointment and called for a broader promotion of government schemes. Deputy Chief Minister Mallu Bhatti Vikramarka and senior leader V. Hanumantha Rao also spoke, with Rao urging a BC caste census and withdrawal of cases against Congress activists from the BRS regime. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ దీపాదాస్ మున్షి గారు, ఏఐసిసి సెక్రటరీలు, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, శాసన సభ్యులు, వివిధ కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన చైర్మన్లు, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీలో వివిధ హోదాలలో ఉన్న నాయకులు, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు, ప్రాణ సమానులైన కాంగ్రెస్ పార్టీ వేలాది మంది కార్యకర్తలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మేమందరం నూతనంగా బాధ్యత చేపట్టిన మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి అండగా నిలబడతామని విచ్చేసినందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నా, సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్న మిత్రులారా, మీకందరికీ తెలుసు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఎన్నో ఇబ్బందులను, ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొని, ఎన్నో అవాంతరాలను అధిగమించి జూన్ 2, 2014 నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర కళ సాకారం చేసి 60 సంవత్సరాల మన ఆకాంక్ష 2004లో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు మనకి ఏదైతే మాట ఇచ్చిండ్రో ఆ మాట నిలబెట్టుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిండ్రు. కానీ ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 10 సంవత్సరాలు
రెండుసార్లు ఎన్నికలు జరిగిన వివిధ కారణాల చేత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాలేకపోయింది. అందుకే 2014 నుంచి తెలంగాణ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను నియమిస్తే పెద్దలు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, పట్టి విక్రమార్క గారి సహకారంతో జూలై 7 నాడు 2021 కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ శాఖ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యత చేపట్టి ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు దాదాపుగా 38 నెలలు నిరంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలని సమన్వయం చేసుకుంటూ ప్రజా సమస్యల్ని పరిష్కరించుకుంటూ ముందుకు సాగడం జరిగింది. ఇవాళ మిత్రులారా, నేను జూలై 7, 2021 బాధ్యత చేపట్టిన తర్వాత అందరితో చర్చించి మొట్టమొదటిగా లక్షలాది రైతాంగానికి 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి ఆనాడు రాహుల్ గాంధీ గారు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ, గాంధీ కుటుంబం మాట ఇస్తే మాట తప్పని, మడమ తిప్పని నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగిన గాంధీ కుటుంబం రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చిన మాట మేరకు ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 6 నెలలలోపే ఇచ్చి 6 గ్యారెంటీలను ముందు పెట్టుకొని మనం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. మనం చెప్పిన మానాడు మార్పు రావాలి అంటే, మార్పు కావాలి అంటే కాంగ్రెస్ రావాలి అని తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో ప్రతి పేదవాడి గుండె తట్టి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదలు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు తీరాలి, రైతులు బాగుపడాలి, విద్యార్థులు చదువుకోవాలి, నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు రావాలి. Also known as Eid-e-Milad, Nabid or Maulid, is a festival celebrated by the Sufi and Barelvi sects on the 12th day of Rabi al-Awwal, marking the birth of Prophet Muhammad. This year, the festival will be observed on September 16, 2024, the Islamic lunar calendar's crescent moon sighting, which began on September 4th, determines the date. While Sunni Muslims celebrate on the 12th of Rabi al-Awwal, Shia Muslims observe it on the 17th. Originating from early Islamic practices and formalized by the Fatimids, the celebration has evolved from early prayers and feasts to include Sufi-influenced customs like processions and public banquets. Despite its widespread observance, some Muslim communities, particularly Salafi and Wahhabi groups, reject the celebration, viewing it as a bid'ah or innovation, since it was not practiced during the Prophet Muhammad's time. At the Bengal Cricket Association or CAB annual awards ceremony on Saturday, star fast bowler Mohammad Shami was recognized for his outstanding performance in the ODI World Cup 2023. Shami expressed his eagerness to rejoin the Bengal team, revealing his goal to play 2-3 matches in the Ranji Trophy next season. This step is part of his strategy to re-enter international cricket after a long hiatus. Additionally, Shami mentioned his anticipation of participating at the National Cricket Academy or NCA to further his comeback. देखो कोशिश जल्दी की कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया टीम से बाहर रहे हुए, मतलब फिटनेस पे वर्क करने में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आऊँ, लेकिन वो भी नहीं चाहता है कि मैं थोड़ा सा डाउटफुल जाऊँ। मैं चाहता हूँ स्ट्रॉन्गर, जितना भी मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होऊंगा उतना ज़्यादा मेरे लिए बेटर होगा, उतना कम चांसेस होंगे इंजरी के। तो बेटर है कि आप 1-2 चांस ना लेके आप फुल फील करके उसको स्ट्रॉन्ग होकर तब जाएं जब ज़्यादा बेटर लगेगा। Can we see you in action for the series against New Zealand?
देखिए, मेरी सबसे पहले कोशिश तो यही है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कंप्लीट आप अपने अपने फिटनेस अपने कंप्लीट कीजिए, उसके बाद डजेंट मैटर बांग्लादेश, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, डजेंट मैटर। तू मतलब 100% में कितना अभी तू फिट हुआ है, कितना तुम सोच रहे हो मतलब नहीं, आप लोग देख ही रहे हैं, बॉलिंग तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि कोई भी डाउट हो मेरे माइंड में या कोई भी डिस्कम्फर्ट वाला फीलिंग आए। जब तक मुझे 100% फील नहीं होगा, जब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ मैं हर तरफ से फ्री हूँ, तब तक मैं एग्री नहीं करना चाहता। चाहे डजेंट मैटर कि मुझे कौन सा फॉर्मेट खेलना पड़े या मुझे कौन सा टीम के अगेंस्ट खेलना पड़े, हो सके चाहे डोमेस्टिक हो मैं उसको भी खेल लूँ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कौन फेवरेट आप देखते हैं एज एन माने क्रिकेटर? अरे हम ही हैं यार, कौन है? বল যে পাকিস্তানকে বাংলাদেশ হারিয়ে এলো এবং তারপরে ইন্ডিয়াতে এসে সিরিজ খেলবে, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কাকে ফেভারিট বাজবে এবং বাংলাদেশ যেহেতু পাকিস্তানকে হারিয়ে এসেছে ভারতকে কি বেগ দিতে পারে, প্রবলেমে ফেলতে পারে? ठीक है, वो अपने अपने जगह पर वो डिपेंड करता है, लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया ना कि इंडिया को हराया है। वो डिफरेंट स्किल है। यहाँ पे इंडिया अपने घर में खेल रहा है, बांग्लादेश से खेल रहा है। बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा कि आज तक के जो रिकॉर्ड बोलते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, आज तक की जो परफॉर्मेंस रही है लड़कों की वो क्या बोल रही है और करंट परफॉर्मेंस क्या है लड़कों की, वो मैटर करता है। अब मेन एक ही चीज़ है, टेस्ट मैच में 5 दिन का गेम होता है, आपको 5 दिन के सारे सेशन जीतने पड़ते हैं, तो आपको फोकस वहाँ पे करना चाहिए, अपनी स्किल पर ध्यान देना चाहिए। আমি সামনে দিকে তাকিয়ে বল যে বাংলার হয়ে তুই বলি কামব্যাক করবি, গত বছর বাংলার খুব ভালো যেত, মোহাম্মদ শামি একটা বা দুটো ম্যাচ যাই খেলুক, এটা কতটা তোর জন্য কামব্যাক দেখছি এবং বাংলার জন্য এটা ভালো হতে পারে যে তুই তোর মতো একটা প্লেয়ারকে পাচ্ছি একটা বা দুটো ম্যাচ, সেটা যে একটু বলি সামনে দিকে তাকিয়ে বল। मैंने हमेशा से आपसे बोला है, हर स्टेज पे बोला है, मैंने हर प्लेटफॉर्म पे आपको बोल चुका हूँ। मैं हमेशा से मैं बंगाल के लिए हमेशा खेलना पसंद करता था, हूँ और हमेशा रहूँगा, क्योंकि अभी भी मैंने यही बात बोली है कि बॉर्न एंड बॉट अप यूपी हूँ लेकिन मेड बाय बंगाल में, तो हमेशा वो रहेगा। और जब भी मौका मिलेगा मेरे लिए, टीम के लिए या बंगाल बॉयज़ के लिए, मैं अपना शेयर करता रहूँगा उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ हमेशा से, और चाहता भी यही हूँ कि अगर मुझे टाइम मिले, मैं फ्री हूँ, तो मैं बंगाल के लिए सर्विस एज ए कैप्टन में उनके साथ खेला हूँ, एज ए कोच नहीं खेला हूँ, लेकिन मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि हाँ क्या सामने कोचेस की क्या फीलिंग होती है। सब आप कोच कोई भी ले लो, मुझे लगता है कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी जो बाउंडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, वही आपके गेम को ऊपर लाता है। हमेशा से आपको बिलीव करना चाहिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट बनाना चाहिए। नहीं, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, बनाने की भी मैंने एक शो हम लोग तैयार कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश यही है कि जैसे मेंस क्रिकेट ऊपर है या मेंस स्पोर्ट्स हमारे ऊपर है, तो वो गर्ल्स में भी आने चाहिए। तो मेन मोटिव यही है कि जो ग्राउंड लेवल के स्पोर्ट्स हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो हमें विलेजेस से निकलते हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो हमें फैसिलिटी सिटीज़ में बेटर मिलेंगी, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, और वो पार्ट बाय पार्ट हम लोग बनाएंगे उसको। और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अवेयरनेस आए कि जो अवेयरनेस है वो क्या चीज़ है, हम कितना सपोर्ट करते हैं, हम अपने बच्चे को किस लाइन में हम भेज सकते हैं, ये सब चीज़ें फैमिली को अवेयर होनी चाहिए। और हमेशा से कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे में टैलेंट कुछ और होता है, हम कुछ किसी और वे में करते हैं, तो उन सब चीज़ों पे वो पॉइंट आउट किए गए हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद कर रहा हूँ उन पॉइंट आउटों को। Good evening and welcome back to One TV News with me, Isma. Former Pakistan captain Yunus Khan has criticized Babar Azam and other top players for prioritizing personal interest over national performance. Khan pointed out that Babar has struggled with his batting, failing to score a half century in last 16 test innings, and suggested that players talk more than they perform. He urged Babar to focus on improving his cricket, taking inspiration from Virat Kohli, who stepped down from captaincy to enhance his batting performance. Khan stressed that players should concentrate on their game rather than social media and should be aware that these opportunities are rare. Meanwhile, despite recent poor performances and calls for changes, the PCB has yet to make any decisions about altering captaincy, leaves it to the coaches and selectors. और बाबर आजम के लिए देखिए यही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस करें। और देखिए जब आप बाबर आजम क्यों कैप्टन बने थे, और मुझे याद है मैं भी उस वक्त मैंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया था,
उस वक्त यही बिहाइंड ये जो फैसला हुआ था कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर है वही पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त इतने ज़्यादा चॉइसेस नहीं थे, तो बाबर आजम सबसे बेस्ट प्लेयर थे और सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे। तो वो जो है ना उन्होंने उस वक्त यही सोचा, उस वक्त चेयरमैन ने, और मैं भी मेरे सामने ये फैसला हुआ था कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर है उसको टीम का कैप्टन होना चाहिए। तो बस बात दरअसल में ये कि आज अगर बाबर आजम या जितने भी बाकी टॉप के प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी। तो मेरे ख्याल से मैं एक बात ये देखता हूँ, बाज़-औक़ात जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बाज़-औक़ात वो खेलते कम है, बोलते ज़्यादा हैं। देखिए ये बोलने का काम तो हम जैसे रिटायर्ड बंदे का पर्सन का काम है। मैं यहाँ बोल के कोई भी भाषण दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए हमारी क्रिकेट खत्म हो चुकी है। तो मैं क्रिकेट खेलते हुए, अगर आपको याद हो, मैं आपको नज़र भी नहीं आता था कहीं, मैं दूर एक स्टील मिल में रहता था और सब मुझे ढूंढते थे। फोकस आपका क्रिकेट होनी चाहिए, हर दिन आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि देखिए अब मीडिया बहुत ज़्यादा होगी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। बाबर आजम से हम सब ये समझते हैं कि वो हर मैच में आएंगे और हर मैच में 100 रन करेंगे, 100 नहीं करेंगे तो भाई वो प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से इतनी एक्सपेक्टेशन है, प्लेयर्स को अब क्रिकेट ज़्यादा खेलनी चाहिए और उनको जो अपने सोशल मीडिया में, बिल्कुल ये नहीं करें सोशल मीडिया को नहीं रन करें, लेकिन आपको अपनी जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे कोचेस ने हमें सिखाया कि बैट और बॉल की ये जंग है, तो आपका बैट और बॉल बोलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपके खुद ऑटोमेटिकली आपके सारे क्रिटिक्स जो होंगे वो आपके साथ हो जाएंगे। जो मैं अपने करियर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे क्रिटिक्स थे और ऐसा भी हुआ कि मैं इसको बिल्कुल गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी हुआ कि मेरे मुतालिक किसने कुछ कहा है, आप लोगों में से किसी ने भी बात की तो उसमें कुछ था, तो उन्होंने आप लोगों ने कहा और मैंने वो जो पेपर था वो मैंने रखा और रोज़ाना सुबह दोपहर शाम वो मैं देखता रहा, उससे मैं मोटिवेशन लेता रहा। तो मोटिवेशन आप एक पॉइंट से भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं माशाल्लाह से इतने स्पॉन्सरशिप हैं, इतना नाम है, और आज तो सोशल मीडिया में आप एक परफॉर्म करते हो तो आप कहाँ तक जाते हो। मैं तो सईद अनवर की बात सोचता हूँ, ज़हीर अब्बास का सोचता हूँ, जावेद मियादाद का सोचता हूँ और ऐसे बहुत बड़े प्लेयर्स को देखता हूँ और सोचता हूँ कि अगर वो आज के दौर में होते तो कितने वो पॉपुलर होते। तो मेरे ख्याल से देखिए आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए और मेरे ख्याल से आपकी फिटनेस इंप्रूव करें, अपने एथिक्स अच्छे करें और एंड में ज़रूर सोचें कि देखिए हम अगर अपने नेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इस कौम के और ये कौम आपकी हालत सामने है कितनी मुश्किलात में। एक क्रिकेट ऐसी है कि वो जो है आपको कहाँ से कहाँ लेके जाती है और कोई एक बंदा भी कोई अचीव करता है तो कितना पॉपुलर होता है। तो मेरे ख्याल से देखें आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, अपनी फिटनेस पे फोकस करें और ये सोचें कि ये जो हमारे पास ये जो मौका है ये बार बार मौका मिलना नहीं है। मेरे पास वो मौके थे, मैंने यकीन करें मैंने कोशिश की कि मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने के लिए। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे नंबर 3 खेलना है, मुझे ओपनर जाना है, मुझे नंबर 6 खेलना है। मुझे हमेशा ये होता था कि भाई अगर टीम को जहाँ ज़रूरत है मुझे वहाँ खड़ा कर दो तो भाई मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे फिर नहीं लगता था कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम के लिए कि भाई ये मौके हैं, माशाल्लाह से टॉप के प्लेयर, इतनी छोटी उम्र में इतनी उन्होंने अचीव कर लिया है, अब इसके बाद आगे क्या करना है। ये कैप्टनसी तो बहुत एक छोटा सा वो है, मेरे ख्याल इससे बाहर निकले और परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान के लिए वंडर्स करें। और बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि मैंने तो सिर्फ 10,000 रन करे हैं, वो 15,000 रन तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस कंट्रोवर्सी से बाहर जाना पड़ेगा। आपके सामने विराट कोहली है, विराट कोहली ने आपके सामने कैप्टनसी छोड़ी है और ख़ुद छोड़ी उसने, और आज उनके परफॉर्मेंसेस देख लें, वो सारे दुनिया के रिकॉर्ड्स जो है तोड़ने चले हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं वो टीम के लिए खेलें और अगर थोड़ा बहुत एनर्जी बच जाए तो भाई फिर अपने लिए खेलें। मेरी तो ये सोच होती थी, तो मेरे ख्याल से इसी सोच से खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।